Okay. So please confirm if slides are visible. Yes, sir. Okay. So today we are going to start Unit 4, and in Unit 4 we are going to discuss about inflammatory bowel disease, that is we called IBD, right? IBD, inflammatory bowel disease, and it's a disease related to GIT tract, gastrointestinal tract. So it can happen to any part of the GIT. And you can, I think every one of you have read about GIT systems in your human anatomy and physiology classes. What are the different parts of GIT systems and how GIT system works. So, with respect to inflammatory bowel disease, it's a as you can see there is a word inflammatory. So, in this disease, inflammations, undesired inflammations play a role, and it's a chronic inflammations of the digestive tract. And as I told you, it can happen to any part of the digestive tract, and these inflammatory bowel disease will occur not instantly, but it takes the time to develop this inflammatory bowel disease. And mainly these inflammatory bowel disease are categorized into two types. One is ulcerative colitis and second one is Crohn disease. So ulcerative colitis mainly affecting the large intestine, and Crohn disease can affect any part of digestive tract, but mainly it affects the small intestine. So under inflammatory bowel disease, there is a two disease, ulcerative colitis and Crohn disease. So ulcerative colitis is mainly affecting the large intestine. It's inflammations of large intestine, whereas a Crohn disease is mainly affecting the small intestine. So these are the two different types of IBD, inflammatory bowel disease. What is its etiology? The reason, exact reason is still unknown, and we are assuming various genetic factors and environmental factors plays a major role in the development of this disease. And so when we are saying for any disease, its reason is not completely known. It means this disease is in idiopathic in nature. So idiopathic means the disease whose etiology is not known. So that we call a idiopathic. So as I told, genetic factors and environmental factors plays a major role in development of inflammatory bowel disease. Environmental factors, particularly what type of food we are eating. Genetic factors, there are a persons who are more susceptible for the development of these inflammatory bowel disease, and there are some kind of infections like salmonella, shigella, and campylobacters, which can result, if these are infections are untreated, could result in a inflammatory bowel disease, right? So this is the etiology. And then epidemiology is, as I told, there are two types of inflammatory bowel disease, ulcerative colitis and Crohn disease. So ulcerative colitis is more prevalent than Crohn disease. The cases of ulcerative colitis we will see more as compared to Crohn disease, and particularly the North America, Northern Europe have the highest incidence and prevalence rate of ulcerative colitis. But however, this is from the last 10 years, cases in India, in our countries are also increasing due to sedentary lifestyles, due to various reasons, which we are going towards the modernizations. So these cases of ulcerative colitis are also increasing in our country also. Pathogenesis of ulcerative colitis. So you have to just remember about, as I told you, it's an inflammatory disease. Inflammations plays a major role in this disease. So if you remember in Unit 1 or Unit 2, we have studies about inflammations. We have studied more detail about what is the mechanism of inflammations, and how these inflammations will result in acute and chronic inflammations and play a role in the development of various disease. So if you recap that knowledge, you will find that inflammations, immune systems plays a major role in inflammations. And if you remember, in this case, particularly, these inflammation is happen in the GIT tract. So in GIT tract, if you remember your human anatomy and physiology, there is a different cells. In GIT systems, epithelial, there are M cells are there. There is a tight junctions of the cells. There is a goblet cells also which release which do the production and release of mucus.
So these defensive, there is a defensive regulations, and there is a means whenever any antigens or anything enters in the GIT tract, so these system will prevent us from the harmful effect of these antigens. But as you know, in our GIT tract, there are also microbes which are beneficial for our bodies. So there is a, so that means there is a balance between the between the beneficial microbes, so that we call a microbes which are healthy, sorry, not healthy, which are healthy for us. And when these healthy microbes are decreased and pathogenics will increase, and these pathogenics microbes will cross the tight junctions of cells, GIT cells. So it enter inside the cells and do the activations of immune signaling pathways. So if you remember, so there is an immune signaling pathways. These immune cells have sensor, and these sensors we call toll-like receptor, TLR, or node-like receptors. So these proteins on the cells, on the immune cells, act as a sensor, and these recognize or differentiate between the self and non-self. And when they recognize, yes, this is a non-self, this is not our body structures, similar structure it is. So it activates the various signaling, and signaling, it will activate first the innate immune signaling will activate. And after, if our innate immune signaling is not able to handle that particular pathogens, so in that case, these innate immune systems will present this antigenic peptide or antigens to the adaptive immune systems. And for this process, approximately 5 to 7 days it will take. So that's why whenever any infection happens, firstly the innate immune system try to rid of it. But if innate immune system is not able to handle, so these innate immune system will present that antigen to the adaptive immune system, and during that process it will take 5 to 7 days. So after presenting this antigen to the adaptive immune system, and in adaptive immune systems, T and B cells plays a significant role. And in T cells, there are a helper T cell, cytotoxic T cell, regulatory T cell. So first, this antigen is presented to the T cells, helper T cells, and in helper T cell there is a CD4 proteins, T cell receptors, and this antigen is catched by the antigen presenting cells will have a MHC, major histocompatibility complex. So major histocompatibility complex 2, when present the antigen, it will be present to the helper T cells. And beside it, there is also needed another signaling that we call co-stimulator signalings, and that co-stimulator molecules on antigen presenting cells, B7 cells will be present, that is the co-stimulatory molecules. And here on, whereas in naive T cells, there is a CD45 or CD28 proteins, and that will attach, and that signaling will be completed. Without co-stimulatory signals, your signaling will not complete, your adaptive immune system will not activated. So after that one, after this presentations of antigen to the adaptive immune system in a correct way, it will results in a clonal expansions of the T cells. So there is a differentiations of T cells and clonal expression of T cells, and different subtypes of T cells will form. Th1 cells, which release the interferons if that antigen is viral, so interferon response is required. Th2 cells will release IL4, IL6, various interleukins. There is a regulatory T cells which also release these cytokines or inflammatory mediators. And side by side, these mediators will activate our B cells and convert B cells into a plasma cells, and then do the formations of antibodies. So this is a normal process, but when these will result in excess, so excess release of the cytokines will happen. TNF alpha, IL number is increased much more, and it results in the inflammations that is not required. So that's one of the major pathogenesis in case of inflammatory bowel disease, whether it is a Crohn's disease or whether it is a ulcerative colitis. Pathogenesis is somewhat similar, right?
Diagnosis, how we diagnose these disease. The patients will come with generalized symptoms, and that symptoms will overlap with other symptoms also. For example, diarrhea. So diarrhea is happen due to many reasons, right? So you can't say if someone have a diarrhea, you will say it's a inflammatory bowel disease. No. So, but again, means if someone have a diarrhea and it's a chronic diarrhea, means within 5 days or 6 days, again the person is suffering from diarrhea. Instead of doing all the antibiotic courses, it's not have these inflammatory bowel disease. Rectal link is also that also give a little bit indication, but not clear indications of inflammatory bowel disease. So to get a clear identifications of inflammatory bowel disease, we are performing specific tests, colonoscopies. By colonoscopies, we can see endoscopy. We can imagine, we can examine, not imagine, the colon part. We can examine whole GIT tract, and we can see is it a inflammatory bowel disease or not. And particularly from blood test, CRP, that is a C-reactive protein, ESR, erythrocyte sedimentation rate, and CBC, complete blood count, will from these tests we will get an idea about the inflammations in the body, how much inflammation in the body. It will These are not a very specific test which will tell us about the inflammation in the GIT tract. These tests will tell us about the inflammations in the whole body, because we are taking a blood samples and blood is circulated everywhere. So you by doing these blood tests, you can't say this is the inflammations in the GIT tract, right? So you can only say that yes, if their level is increased, CRP level is increased, ESR level is increased, your neutrophils count is increased, lymphocyte count is increased. So you can say yes, there is a inflammations in the body, right, and in a complete body. So stool test is tell us about, give a more clear picture. Fecal calprotectin is a protein which is particularly comes into the feces when there is a migration of neutrophils in the GIT tract. So from that one you can get, yes, there is a inflammations in the GIT tract. And biopsy we are doing if we want to verify whether that is a means what kind of inflammations, whether it's going to be a cancerous or non-cancerous, what actually it is. So we can perform a biopsy for a microscopic examination. These are the pictures of colonoscopies. You can see this is a picture. So this is a normal colons where there is a normal blood supply. You can see everything is normal. So B is a case of minor or little bit minor inflammations. So, C case, you can see there is a moderate inflammations, right? And D cases, you can see how much inflammation is there. So it's a serious inflammatory case of that particular that patient is suffering from a serious inflammations. So you have to start the treatment at earlier possibles, right? So treatment, we have some drugs like mesalamines, and particularly these are the drugs which will release these inflammatory stop the productions of these inflammatory mediators. Steroid, as you all know, these are the powerful anti-inflammatory agents. So steroids are powerful to decrease the inflammation. Immunosuppressive drugs, because this is the due to the over activation of the immune system, which is not required. And to suppress the immune systems, we have immunosuppressive drugs also. Some biological antibodies we also have, like TNF alpha antibodies or particular cytokines antibodies, which are also there. If there is a abscess formations or perforations, so in that case we can perform the surgery, and we can perform a surgery for a cancer also. So this is about the inflammatory bowel disease. So if I explain it little bit in Hindi, तो इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज क्या होती है? इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, जैसे इसका नाम से ही इंडिकेट होता है कि इस डिजीज में इन्फ्लेमेशन है,
Next है bowel. Bowel means your GITs. It's related to GIT. So inflammatory bowel and disease. So you can by आपको नाम से ही सेंस हो जाना चाहिए कि ये कहाँ की डिजीज है और इस डिजीज में सबसे ज्यादा रोल किस चीज का है. So it's a inflammatory, it's a bowel, so it's related to GIT system. So chronic inflammations of जब हमारे GIT ट्रैक की inflammations chronic होती जाती है और इस तरह की डिजीज जो है हमारी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जो है, इट विल टेक ए टाइम फॉर द डेवलपमेंट, यू नो, द मींस स्लोली एंड स्लोली इट विल डेवलप. सो दिस इज अबाउट इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज. और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में हमारी दो तरह की डिजीज आती हैं. एक आती है अल्सरेटिव कोलाइटिस, एक आती है क्रोन डिजीज. तो अल्सरेटिव कोलाइटिस, कोलाइटिस आइटिस, जिस भी वर्ड के पीछे आइटिस लगा है, मैंने पहले बताया था, अगर आपको ध्यान हो जब हमने इन्फ्लेमेशन के बारे में पढ़ा था, आइटिस मींस इन्फ्लेमेशन. सो आइटिस, कोलाइटिस, और कोलन इज ए पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन्स. सो इट्स ए इन्फ्लेमेशंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन्स. तो आपको ये भी बहुत ज्यादा ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस लार्ज इंटेस्टाइन की है, क्रोन डिजीज स्मॉल इंटेस्टाइन की है. नो, आप यहीं से ही नाम से ही इंडिकेट आप सेंस कर सकते हो अल्सरेटिव कोलाइटिस. तो ये कोलन, और कोलन किसका पार्ट है? लार्ज इंटेस्टाइन. सो मींस इट्स अफेक्टिंग मेनली द लार्ज इंटेस्टाइन्स. और क्रोन डिजीज एनी डाइजेस्टिव ट्रैक, इट कैन हैपन एनी पार्ट, बट मेनली इट अफेक्टिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन. इटियोलॉजी जो है मैं वो बता रहा था कि बहुत सारी हमारी जो डिजीज हैं उनमें हमें इटियोलॉजी नहीं पता है. हम बोलते हैं कंप्लीट इटियोलॉजी स्टिल अननोन. वी आर अज्यूमिंग दैट दीज आर दी फैक्टर्स जो कि डेवलपमेंट करते हैं इस तरह की डिजीज में. तो जब आप वर्ड यूज करते हो इटियोलॉजी इज नॉट नोन. So if you are saying this disease is idiopathic, that's it. Idiopathic means etiology is unknown. तो या तो आप वर्ड यूज करते हो idiopathic, that is means उसी से पता चल जाता है कि इस डिजीज की etiology known नहीं है. So it's up to you. Genetic factors and environmental factors play a role in the development of inflammatory bowel disease. कुछ इन्फेक्शंस हैं जो कि आप अनट्रीटेड रखते हो तो वो भी एक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में कन्वर्ट हो सकते हैं. स्लोली एंड स्लोली किसी को बार बार इन्फेक्शंस होता है, दीज टाइप ऑफ पर्सन जो है वो मोर प्रोन है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के. किसी के जीआईटी सिस्टम्स में मीन्स पेट साफ नहीं रहता है, जीआईटी में पेन रहती है, या कोई जीआईटी संबंधित जो भी हमारे सिम्टम्स हैं, डायरिया, जो क्रॉनिक डायरिया बार बार होता है, गैस, कब्ज, ये सारी प्रॉब्लम्स बार बार होती रहती हैं. तो ये भी धीरे धीरे, और आप जो डाइटरी जो भी खाना खाते हैं वो आप बहुत स्पाइसी खाते जा रहे हो, आप मीन्स उस पर भी कोई कंट्रोल नहीं कर रहे हो, और आपको पता है कि मैं मोर सस्पेक्टेबल हूँ, मेरे को बार बार जीआईटी की प्रॉब्लम है मेरे को, तो उस तरह के पर्सन्स कन्वर्ट हो जाते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में. अब दो तरह की इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा जो केसेस हम देखते हैं वो देखते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के. क्रोन डिजीज के भी हैं केसेस, बट उतने ज्यादा नहीं है जितने अल्सरेटिव कोलाइटिस के. पहले ये था कि अल्सरेटिव कोलाइटिस क्योंकि बाहर के जो फीडिंग पैटर्न्स, फूड का पैटर्न है वो अलग है, और वो थोड़ा मसाले और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा स्पाइसी और फ्राइड और ये सब चीज़ें जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाती अच्छे से, वो सब खाते हैं, तो उनमें केसेस ज़्यादा थे. बट अब इंडिया में भी हम लोग धीरे धीरे ये अल्सरेटिव कोलाइटिस के केसेस काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं. और डाइट और आपकी एक्सरसाइज और ये सब तो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते ही हैं. ओबेसिटीज वाले पर्सन्स मोर सस्पेक्टेबल होते ही हैं. पैथोजेनेसिस, आपको पैथोजेनेसिस समझने के लिए अगर मैं ये बोलता हूँ कि अगर मान लो आपको कोई डिजीज भूल भी गई और आपको पता है कि इस डिजीज में इन्फ्लेमेशंस का रोल है, और मैंने आपको बताया था जैसे न्यूरोडिजेनरेटिव हमने पढ़ी थी, अल्जाइमर, पार्किंसोनिज्म, ये सब डिजीज, तो इन सब में इन्फ्लेमेशंस प्ले सिग्निफिकेंट रोल. तो अगर आप पूरी तरह से ब्लैंक हो गए, पैथोजेनेसिस आपको समझ नहीं आ रही, आप इन्फ्लेमेशंस का मैकेनिज्म, आप ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का, दीज आर द टू थिंग्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन नंबर ऑफ डिजीज. बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि सर ने बोला है कि इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, तो आपको जो स्पेसिफिक मैकेनिज्म है जिस डिजीज के, जैसे
अल्जाइमर में पर्टिकुलर ए बीटा माइलॉइड का एग्रीगेशन होता है, वो आपने वो चीज लिखी नहीं। और इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस विल एक्ट एज सप्लीमेंट्री, आपके पेपर्स में वो सप्लीमेंट्री का काम करेंगे, आपको मार्क्स ज्यादा दिलाने के काम करेंगे। बट जो मेन जो जिस डिजीज से रिलेटेड जो पैथोजेनेसिस है वो आपको लिखनी होती है। तो इस केस में क्योंकि हाउएवर इन्फ्लेमेशन इज द मेजर पार्ट, राइट, इसमें तो आपका नाम ही इन्फ्लेमेशन है। तो अगर आप याद करो कि जब हमने इन्फ्लेमेशन पढ़ा था तो इन्फ्लेमेशन में क्या क्या पढ़ा था, आपको उसके साथ सिर्फ आपको जीआईटी की जो आपने पैथोफिजियोलॉजी नहीं, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो आपने पढ़ी है जीआईटी की, उसको इसके साथ मैच करना है। मैच मीन्स कि आपको जीआईटी के सेल्स का लिखना है। जब आप विद डायग्राम अगर पैथोजेनेसिस लिख रहे हो आईबीडी की, तो आप फिर उसके जो सेल्स हैं जीआईटी के वो आप प्रेजेंट करो। इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स आईईसी, तो आप टाइट जंक्शन जब बनाओगे तो आप उसमें जब लेवल करोगे तो आप करोगे आईईसी। एम सेल्स जो आपके जीआईटी में होते हैं, गोबलेट सेल्स जो कि म्यूकस का सिक्रेशन करते हैं। तो आपको बस इतनी सी थोड़ी सी चीज करनी है, और उसके बाद जो आपका इम्यून सिस्टम की एक्टिवेशंस, देन देयर इज ए रिलीज ऑफ साइटोकाइन्स, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, दैट इज कंप्लीटली सिमिलर। तो वो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो वैसे ही काम करेगा। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था इम्यून सिस्टम का मेन काम होता है रिकॉग्नाइज करना एंटीजेंस को, देन रिकॉग्नाइज के बाद उसको एलिमिनेट करना, एलिमिनेट के बाद उसको मेमोराइज करना। ये हमारा इम्यून सिस्टम का काम है कि जब मेमोराइज जो मेमोरी सेल्स बनते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब हमें वो इन्फेक्शन हो तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी मेमोरी सेल्स हैं, तो देयर इज नो नीड ऑफ दोबारा आपका वो पूरा एक्टिवेशन की जरूरत नहीं है, वो आपके मेमोरी सेल्स आपको पहले ही प्रोटेक्ट कर लेंगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, आपने देखा होगा जैसे चिकन पॉक्स वगैरह होते हैं, तो वो बोलते थे पहले कि लाइफ में एक बार तो होता ही है। और जब चिकन पॉक्स होता है, जब किसी को हुआ, जैसे मैं अपनी बात बताऊं, मेरे को हुआ था जब मैं B.Pharm कर रहा था, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में था, तब मुझे चिकन पॉक्स हुआ था। तो चिकन पॉक्स आपको पता है बहुत ज्यादा पूरी बॉडी में आपके वो इन्फ्लेमेशंस और बॉडी के ऊपर आपके पिंपल्स, और वो काफी ज्यादा पेनफुल भी रहते हैं। तो फिर जब डॉक्टर के पास गए थे, आई स्टिल रिमेम्बर, डॉक्टर सेड कि कोई दवाई कुछ नहीं, जो आपकी सिट्राजिन, एंटीहिस्टामिनिक, ये सब दवाइयाँ, बाकी कोई स्पेसिफिक दवाई है नहीं। तो घर वाले भी वही बोलते थे कि बस 3-4 दिन में ये ठीक हो जाएगा अपने आप। क्यों? क्योंकि 4-5 दिन जो है, एटलीस्ट 1 वीक, हमारे जो आपने देखा कि हमारा जो बॉडी का अडेप्टिव इम्यून सिस्टम है उसको फंक्शन होने में, उसको एक्टिवेट होने में टाइम लगता है। और जब हमारा अडेप्टिव इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, टी और बी सेल्स, एंटीबॉडीज और हेल्पर टी सेल्स, तो ऑटोमेटिकली अवर मेनी इन्फेक्शंस विल बी रिजॉल्व। तो वो आपका 1 हफ्ते बाद तो धीरे धीरे आपका वो रिजॉल्व होना शुरू हो जाता है। बट शुरू के टाइम में क्योंकि आपका इनिएट इम्यून सिस्टम उसको प्रेजेंट करेगा वहाँ अडेप्टिव के, फिर अडेप्टिव की क्लोनल एक्सपेंशन शुरू होगी, फिर वो काम करेगा, तो इस प्रोसेस में आपका टाइम लग जाता है। बट फिर क्या होता है कि जब आपकी फिर बी सेल से फिर एंटीबॉडी बन गई, जब आप नेक्स्ट टाइम उस वायरस के एक्सपोजर में आओगे तो आपको वो इन्फेक्शन नहीं होता है। तो इसलिए बोला कि एक बार, ये तो एक बार होगा, फिर इंटायर लाइफ आपको होगा नहीं, क्योंकि आपकी बॉडीज में एंटीबॉडीज बन गई हैं। तो आपको इम्यून सिस्टम्स का बहुत अच्छे से समझनी है चीज कि इम्यून सिस्टम्स हमारा प्राइमरी लाइन डिफेंस है, सेकेंडरी लाइन डिफेंस और थर्ड लाइन डिफेंस। प्राइमरी लाइन डिफेंस में हमारा स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, स्किन में हमारी प्रोटीन है केराटिन जो कि हमें प्रोटेक्ट करती है। म्यूकस मेम्ब्रेन में, नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन में बहुत सारे एंजाइम्स हैं, म्यूकस में आपके लाइसोजाइम एंजाइम्स हैं, जीआईटी में हमारा एचसीएल्स है और प्रोटीएजेस हैं, बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो कि ब्रेक डाउन करते हैं। फिर जब हमारा जो भी बाहर का पैथोजेंस है कुछ भी बॉडी में एंटर कर जाता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ जाता है, तो सर्कुलेशंस में हमारे ब्लड है, ब्लड में हमारे ब्लड सेल्स हैं, और ब्लड सेल्स में जो WBC है, इट प्लेज ए रोल इन द इम्यून सिस्टम। तो WBC विल प्ले ए रोल एज ए इनिएट इम्यून सिस्टम। तो WBC क्या करते हैं कि आपका सबसे पहले उन्होंने सेंस करना है, सेंस वो करेंगे कि ये बाहर का है या अंदर का है जो भी एंटर हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं, तो उनके ऊपर सेंसर लगे होते हैं। सेंसर मीन्स
कोई वैसा नहीं कि इलेक्ट्रिकल सेंसर लगा है, प्रोटीन्स होती हैं इनके ऊपर एक्सप्रेस। उन प्रोटीन्स को हम बोलते हैं टॉल लाइक रिसेप्टर, TLR, और नोड लाइक रिसेप्टर, NOD। तो ये प्रोटीन्स क्या करती हैं, सेंस करेंगी कि यस ये रिकॉग्नाइज करेंगे, दैट वी कॉल्ड रिकॉग्निशन। और दूसरा इनके ऊपर जो है और रिसेप्टर्स होते हैं WBC के ऊपर, दैट वी कॉल्ड पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर, PRR। तो पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर मींस टॉल लाइक रिसेप्टर हुआ। और पैथोजेंस के ऊपर क्योंकि उसकी एक अलग तरह की बनावट होती है तो उसको हम बोलते हैं PAMP, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। तो pathogen associated molecular pattern which are present on the pathogens are sensed by the pattern recognition receptor which are present on the WBC, right? A pattern recognition receptor like toll-like receptor, and then it activates the signaling. Signaling after toll-like receptors follow the MY88 dependent signaling or independent signaling, which further do the release of activations of MAP kinase and NF-kappa B pathways, and independent also do the activation of NF-kappa B, and these will act on the nucleus and do the transcriptions, the transcriptions or translational process, and do the release of proteins, right, and release of cytokines, release of interferons, and which will help to kill that particular antigens. This is one process. Another process is phagocytosis. We have discussed already the phagocytosis process. कैसे होता है? It's a oxygen dependent or oxygen independent killing of microbes. Then if now question is, अगर हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो नहीं हैंडल कर पा रहा है, वो ट्राई कर रहा है बट वो नहीं मार पाया, पर थोड़ा बहुत उसने, जब लड़ाई होती है तो दोनों जगह आपका डिस्ट्रक्शन होती है, तो थोड़ा बहुत वो टूटा है जो भी एंटीजेनिक पेप्टाइड्स या एंटीजेंस जो भी अंदर आया है, बट ज्यादा डैमेज हमारे इनिएट इम्यून सिस्टम को हो चुका है। तो इनिएट इम्यून सिस्टम अब क्या करता है कि उसको पकड़ता है एंटीजेंस को, और पकड़ के उसको प्रेजेंट करता है अडेप्टिव इम्यून सेल्स को कि अब हमारे बस का नहीं है, अब आप इसको देखो, इसने यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रखी है जो भी है, अब आप देखिए। अडेप्टिव इम्यून सिस्टम मीन्स एक आपकी सुप्रीम पावर, मीन्स एक हायर अथॉरिटी। तो अब इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए प्रोसेस होता है, ऐसे नहीं कि पकड़ के ले जाने का भी प्रोसेस है। तो जो एंटीजन, उन सेल्स को हम बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जो कैच करते हैं। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हमारे डेंड्रेटिक सेल्स भी होते हैं, आपके मोनोसाइट्स भी काम करते हैं पकड़ने का, तो वो पकड़ेंगे। तो ये आपका एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर प्रोटीन्स होती हैं। तो प्रोटीन्स लाइक MHC, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। तो जो MHC2 होगी वो प्रेजेंट करेंगी हेल्पर टी सेल्स को, जो MHC1 वाले होंगे वो प्रेजेंट होंगे साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को। तो जो MHC2 है वो प्रेजेंट करेंगी टी सेल्स को, हेल्पर टी सेल्स को। तो टी सेल्स के ऊपर भी प्रोटीन्स होती हैं, टी सेल रिसेप्टर होंगे, और हेल्पर टी सेल्स पे CD4 होती हैं प्रोटीन्स, और साइटोटॉक्सिक पे CD। और एक तो MHC की सिग्नलिंग होगी, ये मींस इट्स ए पैथोजेनिक, इससे हार्मफुल फॉर द बॉडी। तो वो बहुत सारे आपके टी सेल्स बनाएंगे, क्लोनल एक्सपेंशन होगी, हाइपर टी सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, रेगुलेटरी टी सेल्स। और ये टी सेल्स हैं, टी सेल्स हैं साइटोटॉक्सिक, ये केमिकल रिलीज करेंगे। जो केमिकल्स लेट आपके तो ये साइटोकाइन से रिलीज हुए, ये बी सेल्स को भी एक्टिवेट कर और उनको इन्फ्लेमेशन, क्योंकि इन्फ्लेमेशन जो है वो फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल दोनों रोल होते हैं, जो अगर आपको याद होगा। तो ये आप
इसमें मैकेनिज्म्स एंड यू कैन एक्सप्लेन इट, राइट। तो डायग्नोसिस में जो ये क्रोनिक डायरिया है, रेक्टल ब्लीडिंग तो होती है आपकी पाइल्स में भी। तो पाइल्स और इसमें क्या डिफरेंस रहेगा? पाइल्स में आपकी पेन होती है, जब पर्सन डिफेक्सेशन कर रहा होता है तब इससे कम पेन, ब्लीडिंग्स वो जो होगी वो आपकी स्टूल के साथ आएंगी। अनएक्सप्लेन वेट लॉस जो है, मतलब वेट लॉस हो रहा है बट काफी रीजन फाइंड आउट कर लिए बट कोई रीजन मिल नहीं रहा है, तो देन यू कैन थिंक ऑफ कि हो सकता है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज हो, ज्वाइंट स्किन प्रॉब्लम्स हैं। बट अगेन जो मेजर डायग्नोसिस जो हमें पता चलता है एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी से, ब्लड टेस्ट से आपको, जैसे मैंने बताया कि ब्लड टेस्ट में जब हम मेजर करते हैं सीआरपी का लेवल, दैट इज वी कॉल्ड सी रिएक्टिव प्रोटीन, ईएसआर इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट और सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, उनसे हमें इतना पता चलता है कि यस इसकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, राइट। फूड टेस्ट से कंफर्म हो जाता है प्रोटेक्टिन इज ए प्रोटीन जो कि पर्टिकुलरली फिकल में आती है, तो हमारी ट्रैक ट्रीटमेंट हम उतनी ज्यादा बात नहीं करेंगे ट्रीटमेंट की, अगेन इम्यूनोसुप्रेसिव देते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा साइटोकाइन्स रिलीज हो रहे हैं, बायोलॉजिकल एंटीबॉडीज दे देते हैं, सर्जरी हम करते हैं जब अगर एब्सेस फॉर्मेशंस हो या परफोरेशंस या पट उसमें मीन्स वो पट गया है और कैंसर्स है, तो ये सब ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जो कि आईबीडी में यूज करते हैं, राइट। So this is about IBD. Anyone have any questions? Please ask, or then after that we will move to another disease, that is a jaundice. Yes, no one. Okay. So jaundice is another disease, and jaundice आपने नाम बहुत कॉमन सुना होगा, पीलिया। और आप पिक्चर में देख सकते हो कि जब हमारे पर्टिकुलरली आईज का कलर जो है वो पीला हो चुका होता है, स्किन की कलर पीला हो जाता है, तो उसको हम जॉन्डिस बोलते हैं। और ये पीलापन किस वजह से होता है कि बिलीरुबिन जो है उसका अमाउंट हमारी बॉडी में एक्सेस होता है, तो उस कंडीशंस को हम बोलते हैं हाइपरबिलीरुबिनीमिया। पर हाइपरबिलीरुबिनीमिया का मतलब ये नहीं है कि इससे जॉन्डिस, क्योंकि अगर आप उसकी नॉर्मल वैल्यू से अगर थोड़ा बहुत 0.2 टू 1.2 mg पर डेसीलीटर से अगर 1.6 तक हो गया, तो 1.6 इज ए कंडीशन ऑफ हाइपरबिलीरुबिनीमिया, बट इट्स नॉट ए जॉन्डिस। जॉन्डिस हम तब बोलेंगे जब उसका बिलीरुबिन का लेवल बड़ा है, और बढ़ने के बिलीरुबिन के लेवल इतना बड़ा है कि वो आपका कलर जो है आईज का, स्किन का, म्यूकस मेम्ब्रेन्स का, वो येलो में कन्वर्ट हो गया, देन वी विल कॉल इट ए जॉन्डिस, राइट। तो जॉन्डिस पीलियापन, राइट, हाइपरबिलीरुबिनीमिया, तो बिलीरुबिन का लेवल बढ़ गया। और किस वजह से बढ़ता है? या तो पेशेंट्स को हेमोलाइटिक एनीमिया है, या कोई लीवर की डिजीज है, हेपेटाइटिस है, इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर, गॉल स्टोन्स की वजह से भी पीलिया होता है, ट्यूमर्स हैं तो उसकी वजह से भी आपको पीलिया हो सकता है, राइट। तो आप इसकी पैथोजेनेसिस अगर समझोगे तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि बिलीरुबिन क्या है और कैसे बनता है बॉडी में। बिलीरुबिन एक हमारा वेस्ट मटेरियल है जो कि नॉर्मली प्रोड्यूस होता है, और कब प्रोड्यूस होता है? जब हमारे आरबीसी सेल्स ब्रेक डाउन होते हैं। आप सबको पता है आरबीसी की लाइफ साइकिल 120 डेज है। हमारी बॉडी में आरबीसी बनते हैं, फिर वो टूट जाते हैं, फिर नए बनते हैं। तो जब आरबीसी टूटते हैं तो उसमें आपको पता है आरबीसी में, रेड ब्लड सेल्स में हेमोग्लोबिन करके एक ये चीज होती है जिसको हम हेमोग्लोबिन बोलते हैं। हेमोग्लोबिन दो चीजों से बना होता है, वन इज हेम एंड अनदर वन इज ग्लोबिन, राइट। सो ग्लोबिन इज ए प्रोटीन एंड हेम इज ए आयरन। हेम मीन्स आयरन, राइट।
तो ग्लोबिन जो प्रोटीन है, प्रोटीन किस चीज की बनी होती है? अमाइनो एसिड्स की। जब प्रोटीन टूटेगी तो क्या प्रोड्यूस होगा? अमाइनो एसिड्स। और जो हेम वाला जो पार्ट है वो उसमें आयरन्स है, तो आयरन्स टूट जाएगा। फेरेटिन अमाउंट, जब हम ब्लड टेस्ट करते हैं फेरेटिन का लेवल भी चेक करते हैं, तो एक पार्ट वो हो गया। अब आप उसमें जब आपका हेम वाला जब आयरन पार्ट निकलता है तो उसमें आपका जो प्रोटोफायरिन होता है, प्रोटोफायरिन मतलब प्रोटोफायरिन में पायराजोल, पायराजोल अगर आपने केमिस्ट्री केमिस्ट्री शायद आप लोग पढ़ ही रहे हो, पायराजोल का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, रिंग 5 1 2 3 4 5 नंबर। और यहाँ पे आपका, अब नाउ आई एम अनएबल टू टेल, आई होप यू आर एबल टू सी पायराजोल का स्ट्रक्चर। तो पायराजोल जब आपके ऐसे ग्रुप में लिंक होते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रोटोफायरिन। जब इस जो ये रिंग स्ट्रक्चर बनी है पायरोल रिंग्स की, तो 3 और 4 मॉलिक्यूल्स की, तो इसके बीच में आयरन जब लग जाता है तो हम उसको बोलते हैं हेमो, हेम, हेमो जो बन जाए। जब आयरन निकल जाता है और ये जो रिंग जो स्ट्रक्चर बनी है, सर्कुलर जो रिंग बना है, ये जब टूट जाता है तो उससे प्रोड्यूस होता है बिलीवर्डिन। देन बिलीवर्डिन से हमारा कन्वर्ट होता है बिलीरुबिन में, राइट। तो बिलीरुबिन जो है वो प्लाज्मा में हमारी प्रोटीन्स है एल्ब्यूमिन, उसके साथ कम्प्लेक्स बना लेता है। क्योंकि अगर कम्प्लेक्स नहीं बनाएगा, अगर बिलीरुबिन हमारा फ्री रहेगा, तो एज आई टोल्ड यू इट्स ए वेस्ट मटेरियल, टॉक्सिसिटी कर सकता है। तो ये हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकली ये सिस्टम है कि वो एकदम बाइंड हो जाता है एल्ब्यूमिन से। तो एल्ब्यूमिन से बाइंड होके इस बिलीरुबिन को हम बोलते हैं अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन, और ये बिलीरुबिन फिर एंटर करता है हेपेटोसाइट्स में, हेपेटिक सिस्टम में, लीवर में। तो वहां पे हमारा एंजाइम्स होता है यूडीपी ग्लूक्रोनाइड ट्रांसफेरेज, तो वहां बिलीरुबिन कन्वर्ट होता है बिलीरुबिन ग्लूक्रोनाइड, which convert this bilirubin into a water soluble molecule। तो ये हेपेटोसाइट में हमारा नॉर्मल फेज 2 जो मेटाबॉलिज्म होता है उसमें ग्लूक्रोनाइडेशन जो होती है, तो उसका फंक्शन ये होता है कि हम कन्वर्ट करें जो लिपिड सॉल्युबल चीजें हैं, क्योंकि जितनी लिपिड सॉल्युबल चीजें अगर हमारी बॉडी में अक्यूमुलेट हो जाती होती रहेंगी तो इट विल क्रिएट ए टॉक्सिसिटी, राइट, जो कि अनडिजायर्ड है। तो इनको, हमारा बॉडी का सिस्टम ऐसा है, जो हमारे लीवर सेल्स हैं वो क्या करते हैं, एक ग्लूक्रोनाइड प्रोटीन्स है उसके साथ कंबाइन करके इनको वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट कर देते हैं। वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट हो गया तो ये बॉडी से निकल जाएंगे, यूरिन के थ्रू निकल जाएंगे। तो ये जब बिलीरुबिन ग्लूक्रोनाइड बन जाता है, दैट इज वी कॉल्ड ए कंजुगेटेड बिलीरुबिन। और ये बिलीरुबिन जो है, ये बिलीरुबिन कंजुगेटेड बिलीरुबिन हमारा बाइल्स में, ये बाइल्स में आपके क्या क्या चीजें होती है, बाइल एसिड्स होते हैं, बाइल सॉल्ट्स होते हैं, और ये बिलीरुबिन होता है कंजुगेटेड बिलीरुबिन। तो ये बाइल जो है ये हमारी स्टोर हो जाती है गॉल ब्लैडर में, राइट। तो गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाती है, जब डाइजेशन हमारा शुरू होता है तो ये जो है बाइल्स जो है प्ले रोल इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड, राइट, डाइजेशन में हेल्प करती है। तो ये तो नॉर्मल कि हमारा बिलीरुबिन कैसे बनता है, कैसे वो मीन्स रिमूव होता है बॉडी से, ये तो नॉर्मल प्रोसेस है। अब इस नॉर्मल प्रोसेस में जैसे मैंने बताया कि पीलिया ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाता है नॉर्मल लेवल से, और बढ़ जाए नॉर्मल लेवल से तो उसको हम बोलते हैं हाइपर बिलीरुबिनेमिया। बट जो बड़ा हुआ लेवल जब डिपॉजिट हो जाता है, आपकी कलर जो आईज क्लेरा का कलर है वहां पे येलो, स्किन येलो कलर की, तब हम उसको बोलते हैं जॉन्डिस। तो ये आपका बिलीरुबिन का लेवल्स, जैसे अगर आपने पिछली स्लाइड में देखा होगा, मैंने बोला कि रीजन जो है जॉन्डिस के, वो हो सकता है किसी को हेमोलाइटिक एनीमिया हो। हेमोलाइटिक एनीमिया मीन्स आरबीसी के सेल्स ब्रेक डाउन जल्दी कर रहे हैं, तो आरबीसी अगर जल्दी ब्रेक डाउन करेगा आपका बिलीरुबिन लेवल्स बढ़ सकता है, राइट। अगर किसी को गॉल स्टोन की प्रॉब्लम्स है तो आपका बिलीरुबिन बढ़ सकता है, क्योंकि वो आपके ऑब्स्ट्रक्शंस होंगी, राइट। अगर किसी को हेपेटोसाइट्स में प्रॉब्लम है, हेपेटाइटिस है, तो हेपेटाइटिस की वजह से भी जॉन्डिस हो सकता है, राइट। और क्वेश्चन ये आता है कि जो यंग हैं उनमें तो बिलीरुबिन, ये जॉन्डिस जो है वो कम पाया जाता है, बट बच्चों में ज्यादा होता है। तो बच्चों में क्यों ज्यादा होता है? बच्चों में जॉन्डिस जो है उसकी प्रॉब्लम ज्यादा रहती है। प्रॉब्लम इसलिए रहती है क्योंकि उनके आरबीसी क्विकली ब्रेक डाउन भी होते हैं, जो कि हमारे 120 में होते हैं उनके जल्दी होते हैं। बच्चों में हेपेटोसाइट्स का जो फंक्शंस हैं वो पूरी तरह मैच्योर नहीं होते,
तो जो ये ट्रांसपोर्ट वाला सिस्टम है, बिलीरुबिन कन्वर्ट होगा आपका कंजुगेटेड बिलीरुबिन में, वो उतना इफेक्टिवली नहीं होता। तो ये सब रीजन है, बट नॉर्मली जो हमारा जॉन्डिस है वो विदाउट, पर्टिकुलरली इन अडल्ट, विदाउट ट्रीटमेंट्स 1-2 हफ्ते में ये ठीक हो जाता है, राइट। तो डायग्नोसिस पहले बात कर लेते हैं। डायग्नोसिस आप कैसे करोगे कि ये पीलिया का केस है, स्किन एंड यूरिन कलर। स्किन में पर्टिकुलरली आईज में आप देखोगे तो उसमें आईज में येलो कलरेशंस होगी। लीवर फंक्शन टेस्ट आप करोगे, एसटीओटी एसटीपीटी, लीवर में क्या, अगर एसटीओटी एसटीपीटी बढ़े हुए हैं तो मीन्स लीवर में इंजरी हुई है, राइट। बिलीरुबिन अनकंजुगेटेड अगर आपका ज्यादा आता है देन कंजुगेटेड, तो इट यू विल गेट ए सेंस इट्स ए हेमोलाइटिक एनीमिया, तो आप ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंग दोगे। एमआरआई सीटी स्कैन हम तब करते हैं जब आप सस्पेक्ट कर रहे हो कि ये जो जॉन्डिस है ये हो सकता है स्टोन की वजह से, गॉल ब्लैडर के स्टोन की वजह से है। तो उस केस में हम इमेजिंग से देखते हैं कि स्टोन है क्या है, कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शंस है, राइट। लीवर बायोप्सी हम तब करते हैं जब आप सस्पेक्ट कर रहे हो कि हो सकता है ये कैंसर भी हो सकता है लीवर्स का, तो हम बायोप्सी के लिए जाते हैं। ट्रीटमेंट जैसे मैंने बताया कि जॉन्डिस का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, थोड़ा आयुर्वेदिक और ये सब चीज़ें लेते हैं, बट अगेन ट्रीटमेंट हमें करना पड़ता है अंडरलाइन काउज का, कि क्या हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम तो नहीं है, हेमोलाइटिक एनीमिया तो नहीं है, या उसको गॉल ब्लैडर स्टोन की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट दी जाती है, क्योंकि अगर आप उसकी अंडरलाइन काउज को सही करोगे तो ऑटोमेटिकली पेशेंट ट्रीट हो जाए, राइट। तो आई थिंक पहले हिंदी में हो गया, तो लिटिल बिट फास्ट आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी एज टाइम इज अबाउट टू complete. So jaundice is a liver disease, and it's happen due to high level of bilirubin, and which results in the discolorations, the yellow colorations of eyes and mucous membrane, that we call a jaundice. And etiologies, there are many reasons for it. Persons having a hemolytic anemia, persons suffering from hepatitis, gallstone or tumors, these are the one of the reasons which can create a jaundice. So before jaundice, you have to be understands, as in jaundice bilirubin level is increased. So before going through pathogenesis, you have to understand how bilirubin is created in the bodies, how it is produced. So bilirubin is particularly produced by the lysis of RBC, and in red blood cell there is a hemoglobin, and hemoglobin is made up of two things. One is heme, that is related to iron, and globin is a protein, so it will do the breakdown of proteins into amino acids. And heme, particularly, you know, if you see the hemoglobin structures, you will find that there is a protopyrin is there. Protopyrins, what is the structure of protopyrin? Protopyrins contains a group of pyrrole molecules, and these makes a ring structure, and in ring structures, when there is a irons, that is a heme. So when you are removing that one, because after breakdown this heme part will be separated out, and another part will be the structure which is in the ring, it will be break down and it convert into a biliverdin, that we call biliverdin, and it will further convert into a, with the help of biliverdin reductase enzymes, this biliverdin is converted into bilirubin. And as I told you, bilirubin is a waste material and toxic material, so immediately it bind with the proteins which is present in the plasma, and that is the albumin, and it make a albumin bilirubin complex, and then it will transport it to the hepatocytes, where it conjugate with the glucuronide, and glucuronide convert this bilirubin into a water soluble forms, that is bilirubin glucuronide formations, and then finally it is reached in the stored in the in the form of vials in the gallbladder. So this is a normal physiology. So when you are writing about a pathophysiology, you have to be show this disturbance in this normal physiology. So you have to, when you are writing pathophysiology, you have to write increased amount of bilirubin. So here you can write about the hemolytic anemia. So in here, if you are writing a hemolytic anemia, then you have to make one arrow where you can see, so that there is a increased degradations of RBC, increased degradation of hemoglobin. So increased degradation of hemoglobin, increased amount of biliverdin, increased amount of bilirubin.
right? So like that way you can see, you can show the pathophysiology. Another where you can show the pathophysiology is about the hepatocyte. If there is a problem of hepatitis, so hepatitis is also disturb this conversions of bilirubin into a conjugated bilirubins, unconjugated to conjugated. So you can show here. You can show here also in pathophysiology where is this bile is stored in a gallbladder. So in gallbladder stones, this process will be disturbed. So there are many ways by which you can present the pathogenesis. So diagnosis, we are doing the liver function test, SGOT, SGPT level is increased. So you will say this is a liver injury. Bilirubin unconjugated more than a conjugated, unconjugated. See here the conjugation is happen. So if the persons have a more unconjugated bilirubins is there, so you can get a sense it's a hemolytic anemia. MRI, CT scans, we are doing when you want to verify whether it is a stone formations in the gallbladders. Liver biopsy when there is a, you are suspecting for a cancer. And treatment we are giving depending upon the underlying cause. So it's all about hepatitis, sorry, not hepatitis, about the IBD and the jaundice. Now it's open for your queries. So please ask. Anyone? Anyone have any query? Please ask about jaundice, about IBD, inflammatory bowel disease. Okay. So next we will discuss about another disease like hepatitis and alcoholic liver disease, and then we will go for a disease of the bone, osteoarthritis, arthritis, right? So if there is no queries, if you have any queries, you can put in a chat box also. I think someone have read. No, Raj Singh is okay. Okay, so I think we have only 1 minute. So if anyone want to add something, you can add. Anyone? We have only 1 minute. I will wait for 1 minute, then I will close it. I hope everyone understood about jaundice and IBD. Yes, sir. Okay. Okay, so thank you very much. Have a very good day. Thank you. Thank you Thank you, all. sir. Thank you, sir. Thank you, sir.